पैक। सो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन के डेटा फील्ड्स कैसे हम स्क्रीन फ्लो में फैच कर सकते हैं। पिछले सेशन हम लोग देखा था कि जब हम लोगों ने स्क्रीन फ्लो यूज़ किया था, सो उसमें हमने वैल्यूज ड्रैग एंड ड्रॉप अपने टेक्स्ट उठा के डाल देता हूँ और उस पर हम लेवल कर देते हैं और उसकी वैल्यू डालते थे, ठीक है। बट इस सेशन में हम क्या करेंगे कि सारे फील्ड्स हम अपने स्क्रीन फ्लो में वन एट अ टाइम कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक दिस हमें ऐसा कुछ फॉर्म चाहिए, बट हमने क्या किया था, बार बार इसको बनाया। जैसे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के डेटा टाइप बनाना पड़ता था, जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में जाएगा। सपोज कर लो ये एनुअल रेवेन्यू नंबर है तो ये नंबर वाले फील्ड्स में जाएगा, डेटा टाइप में जाएगा। तो ऐसे हमें करके बनाना पड़ा था। पिछले सेशन में हम लोग ने ये सीखा था। बट इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे सो दैट इट कैन फेच ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द अकाउंट इंफॉर्मेशन लाइक दिस। ओके, फ्लो में गया, न्यू फ्लो, start from scratch, next screen flow, create, click on plus icon, screen flow, card information, ओके। कॉन्फ़िगर हेडर में रहना है तो नो इश्यू। सो हेडर टेक्स्ट में यूज दिस स्क्रीन फ्लो टू एंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं चाहता हूँ उसका कलर फॉन्ट साइज बोल्ड हो एंड ये कलर, ओके, जस्ट इसको कलर आपका येलो हो जाए, ठीक है, डन, ठीक। सो मैं इसको सेव करके मैं देखता हूँ अकाउंट इंफॉर्मेशन और मेंशन कैसे शो हो रहा है, ठीक है। डिबग, लेट्स डिबग इट, रन, यूज दिस स्क्रिप्ट टू एंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कटेस्ट, अब अब ये वाले सारे फील्ड्स वगैरह अलाइनमेंट वगैरह अपने स्क्रीन फ्लो में कैसे कॉल करूँ। ओके, सो कंपोनेंट के बगल में एक फील्ड करके सेक्शन होगा, फील्ड पर क्लिक करना, रिकॉर्ड वेरिएबल कोड, क्लिक ऑन दिस, ये न्यू रिसोर्स आएगा। न्यू रिसोर्स पर क्लिक करोगे तो लेट्स ले नेम इट्स अकाउंट, ओके। एनीथिंग यू वांट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज अकाउंट। इफ यू वांट the lead information, then write lead info, search lead. If you want any custom object, just search for it and it will be open for that. Okay, just available for output, available for input, click on done. Okay, it will fetch all the fields which are required, which are present in the account information. It will fetch all the leads like this, okay, as you can see in the screen. Okay, so simply मैं एक छोटा सा फॉर अकाउंट नेम, अब एक सेक्शन बनाता हूँ। जो सेक्शन होगा, यहाँ पर सेक्शन होगा सर्च सेक्शन, जो लेवल अलाइनमेंट को ठीक करेगा। सेक्शन में इंक्लूड हेडर, यू वांट टू इंक्लूड हेडर, यस आई वांट टू इंक्लूड हेडर। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन, सो अकाउंट इंफॉर्मेशन, ओके, लाइक दिस, ओके, सेम एज इट अकाउंट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी वन, ओके, नो इशू, अंडरस्कोर वन तो नहीं है, ठीक है। एंड फुल विथ, ओके, एड कॉलम, ये 2 वेट में डिवाइड हो गया, 6.5 6.5 12:12 होता है, बट 6.5 में डिवाइड हो गया, हाफ वेट में, ओके। सो go to account, drag the component to the account name, correct, same it is account name, rating, search for rating, account rating, okay, parent account,
Okay, phone, fax, website. Phone, fax, website. Ownership, account number, account site. Account, account site. Type, industry, and one. Type, industry, industry, and one. Employees, ownership, ticket symbol. Okay, just leave it. Okay, these are the details. I don't want to show the header because it already the header will be oh in the account information. Just remove this. Okay. What this is all about this. In the configure section, footer section, only I want a save button. That's it. No hide previous, hide pause. Okay. So I think I should be done from my side. Just save as. A screen for object can't be referenced the account ticket symbol because the data doesn't support the object. Replace the account ticket symbol. Open this thing, ticket symbol, where it is. Just remove this. Okay. SIC code, add SIC code. Okay. Save as. Let's debug it. Okay. See, here all the details are to be fetched. Account number, phone, fax, number, employee, account type, parent account, account site, type, industry, SIC code. These all are data to be fetched in the screen flow. What are the information on the account page? Okay. This. So in the next session, we will discuss another video for that how to create whenever the screen flow is used, we want to create a record through a screen flow. Okay. So I hope you like this video. If you like this video, please hit like and subscribe my channel. So that's all about it.